बेपनाह हम्दो सना उस ज़ात पाक के लिए जो किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो ज़ात बुलंदो वाला है, अरफा वाला है, वो अज़ल से है, वो अबद तक रहेगी। उस ज़ात बाबरकत को किसी चीज़ की हाजत नहीं है, क्योंकि वो वाहिद है, वो आहद है, वो तन्हा है, वो यकता है, वो हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि वो आपका और मेरा रब है। And my dear creative minds, Assalam Alaikum and a cheerful evening to all. First, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. First and foremost, I would like to thank Blitz Technical Institute for providing me with an honor and opportunity to express my thoughts and feelings and gratitude towards the institute in words. Starting with my own interest, I was immersed in every aspect of art and colors. I love to draw, sketch, paint and doodling. In short, I love to paint and pen down whatever I felt and whatever my visuals were there in my mind. I was a creative and I am a creative person, and I wanted to pursue a career that aligns with my creativity. Observing the global trend of digitalization, I decided to digitize my skills and creativity as well. And today, I'm glad to say that this proved to be the best choice for me for acquiring the skill that I wanted, and it was graphic designing. Let's give them a huge round of applause for being the best institute in the town. From intern supervisor to the front desk coordinator, and from committed directors to immensely experienced instructors, every human being who has been involved in this institute proved to be extremely loyal and helpful to the institute as well as to the peers, and I am very glad to say these words today. Now, to my fellow graphic warriors. Graphic designing isn't just a skill, it is not just meant to earn money, it's not just a profession or a career that you pursue. It's more about storytelling, evoking emotions, and having a long-lasting impact. For the world, actions speak louder than words, but for us, for the designers, pixels speak louder than words. I want to say, we all have power of visuals, we all have a power of pixels, and we all are capable of changing the mindsets of the whole world. As today you will step out into the world beyond these walls, which is full of colors, mind that, be loyal to the abilities that you possess, be loyal to your inner selves. May Almighty guide our pen and illustrations away from the evil and the negativity, and the visuals that we create be the ambassador of peace and advocate of positivity. The certificates we receive today are not merely just a piece of paper. It's a reward. A reward for all those tireless efforts and for all the countless iterations we have made to achieve a perfect design. I admittedly say that the rejections we have faced or designs have faced have brought us much closer to perfection. I'm thankful to all that they have taught to me. I wish other people can teach me. Good things take time. I'm very thankful to all my teachers for being for giving us such precious time and making us that much special. All have given their best and 100% to us. But in all types of business, there are some starting circumstances. But that's all right. तो जब a week before the ceremony, सर ने मुझे कॉल किया और सर ने बताया कि ceremony है और you have to do speech और some sort of things. तो मैं गई ChatGPT के पास, सभी जाते हैं, सब नहीं वहाँ सीखी होगी ऑलमोस्ट.
मैंने भी जाके लिख दी भाई, मतलब मुझे ग्रेटेस्ट स्पीच चाहिए भाई, मैंने थैंक्स गिविंग करनी है भाई, मुझे सबसे बेस्ट स्पीच चाहिए। ChatGPT ने भी बहुत लंबा पैराग्राफ दिया, लेकिन फिर जब मैंने वो पैराग्राफ रीड करना शुरू किया, उसकी जो अंग्रेज़ी थी वो बहुत ज़्यादा बाहर थी, ना मुझे प्रोनाउंस करने आ रही थी, ना मुझे समझ आ रहा था क्या हो। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरे मोमेंट्स गुजरे अपडेट्स में वो बहुत बेस्ट थे, मतलब मैं रिग्रेट नहीं कर सकती अपडेट्स आना, मतलब ज़रा सा भी नहीं कर सकती। हाँ मतलब थोड़ी मुझे मौत आती थी यहाँ पे आकर, क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है, लेकिन बहुत सब कुछ बहुत बेटर था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा, और मैं पैराग्राफ्स वगैरह नहीं रीड करने वाली। तो मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया था एक नाम से जिसने मुझे और आप सबको बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को कि वो यहाँ आए तशरीफ़ लाए सेरेमनी में। इस सेरेमनी का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों को मेंटली बताया जाए, उन्हें ये चीज़ समझाई जाए कि बेटा यू अचीव समथिंग। और यहाँ पर जो है मतलब मेरे पूरे मैंने जब से स्कूल स्टार्ट किया था मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत थी, ना ही मुझे कोई टीचर पसंद आता था। लेकिन जब 9th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था तो सिपासिब से मुलाकात हुई, और भाई मैं फ़ैन होती सिपासिब। प्लेयर्स एकेडमी ने हमें टेक्निकल महारतों के साथ साथ विजुअल कम्युनिकेशन की सलाहियत देने में मदद की। शुक्रिया प्लेयर्स एकेडमी। हमें चाहिए कि इस नूर को आगे बढ़ाएं और तालीम और एकेडमी के इस मौजे को सरगर्म रखें। शुक्रिया। मैंने यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स से मेरे ज़हनती हुनर में बेहतरी आई और मेरे ज़हनती ख़यालात भी बढ़ गए। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। यानी मैं नायदा हूँ और Ladies and gentlemen, esteemed faculty, respected guests, and my dear creative minds, Assalamu Alaikum and a cheerful evening to all. First, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. First and foremost, I would like to thank Blades Technical Institute for providing me with an honor and opportunity to express my thoughts and feelings and gratitude towards the institute in words. Starting with my own interest, I was immersed in every aspect of art and colors. I love to draw, sketch, paint and doodling. In short, I love to paint and pen down whatever I felt and whatever my visuals were there in my mind. I was a creative and I am a creative person, and I wanted to pursue a career that aligns with my creativity. Observing the global trend of digitalization, I decided to digitize my skills and creativity as well. And today, I'm glad to say that Blades proved to be the best choice for me for acquiring the skills that I wanted and for graphic designing. Let's give them a huge round of applause for being the best institute in the town. From intern supervisor to the front desk coordinator, and from committed directors to immensely experienced instructors, every human being who has been involved in this institute proved to be extremely loyal and helpful to the institute as well as to the peers, and I am very glad to say these words today. Now, to my fellow graphic warriors,
Graphic designing isn't just a skill. It is not just meant to earn money. It's not just a profession or a career that you pursue. It's more about storytelling, evoking emotions, and having a long-lasting impact. For the world, actions speak louder than words. But for us, for the designers, pixels speak louder than words. I want to say, we all have power of visuals, we all have a power of pixels, and we all are capable of changing the mindsets of the whole world. As today you will step out into the world beyond these walls, which is full of colors, mind that, be loyal to the abilities that you possess. Be loyal to your inner selves. May Almighty guide our pen and illustrations away from the evil and the negativity. And the visuals that we create be the ambassador of peace and advocate of positivity. The certificates we receive today are not merely just a piece of paper. It's a reward. A reward for all those tireless efforts and for all the countless iterations we have made to achieve a perfect design. I admittedly say that the rejections we have faced or designs have faced have brought us much closer to perfection. I'm thankful to all for accompanying me in a memorable journey that is full of adventures, and I want to say, don't let the pixels of the memories you have made in plates be pixelated. Keep them sharp and keep them vivid. In conclusion, I pray for Blitz to shine the brightest, and with every morning, the sun rises with achievements and success. And for all the designers sitting out there, never let your creativity fade. Never let the colors of your visuals fade, and have a long-lasting impact. And you have the power to change the world. Thank you. उसकी जो अंग्रेजी थी वो बहुत ज़्यादा बाहर थी, ना मुझे प्रोनाउंस करने आ रही थी, ना मुझे समझ आ रहा था क्या। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरे मोमेंट्स गुजरे ब्लिट्स में वो बहुत बेस्ट थे। मतलब मैं रिग्रेट नहीं कर सकती ब्लिट्स आना, मतलब ज़रा सा भी नहीं कर सकती। हाँ, मतलब थोड़ी मुझे मौत आती थी, आप जाते क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है, लेकिन बहुत सब कुछ बहुत बेटर था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा, और मैं पैराग्राफ वगैरह नहीं लिख के। तो मैंने ब्लिट्स ज्वाइन किया था 1% के पीछे से बातें। मेरे फेवरेट टीचर हैं, मतलब मेरे मैंने आपसे स्कूल स्टार्ट किया था, मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत थी, ना ही मुझे कोई टीचर पसंद आता था। लेकिन जब 9th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था तो सिर्फ से मुलाकात हुई, और भाई मैं फ़ैन हो गई सिर्फ, मतलब बिल्कुल ट्रूली दिल से फ़ैन हो गई। मुझे सिर्फ की क्लास लेने पे मैं मर रही होती थी कि बस आए, जैसे ही मतलब टाइम पूरा, और सिर्फ भी क्लास आए, और सिर्फ ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरा इंटरेस्ट भी हुआ पढ़ाई में सिर्फ की वजह से, और अ ह्यूज थैंक्स टू सिर्फ कि मेरा पढ़ाई में बहुत से इंटरेस्ट गेन हो गया। और ब्लिट्स का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि सर आसम और सर अली बहुत अच्छे टीचर्स थे, और द फैकल्टी वाज अमेजिंग। और मुझे और बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द थिंग दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब काफ़ी अर्से बाद। मैं बहुत नए स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई में ज़्यादा ट्रॉफी वगैरह नहीं मिलती मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे आज सर्टिफिकेट मिल रहा है। और हाँ, बस एक राउंड ऑफ अप्लॉज से आसिफ के लिए, सर अली के लिए, थैंक यू सो मच। मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सिर्फ ब्लिट्स एकेडमी के साथ गुजरे हुए हैरान को सफ़र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ कहने को क्यों यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स से मेरे ज़हनी हुनर में बेहतरी आई, और मेरे ज़हनी ख्यालात भी बढ़ गए। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ दो, बेसिकली स्पीकर गरीब के दिल को मुतासर करने वाली ज़ुबान फराहम करता है। ब्लिट्स टेक्निकल एकेडमी ने ना सिर्फ हमें टेक्निकल
मिलिट्स अकेडमी ने ना सिर्फ हमें टेक्निकल चीज़ों का होशियार बनने के लिए बल्कि खुद के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का जरिया बनाया। हमें चाहिए कि इस सलाहियत की कदर करें। मिलिट्स अकेडमी ने हमें टेक्निकल महारतों के साथ साथ विजुअल कम्युनिकेशन की सलाहियत देने में मदद की। शुक्रिया मिलिट्स अकेडमी। हमें चाहिए कि इस नूर को आगे बढ़ाएं और तालीम और अकेडमी के इस बोझे को सरगर्म रखें। शुक्रिया। People say I have learned anything reasonable, and though we have some bad circumstances and some difficulties, I know our teachers have faced much difficulties than us, but the patience, illustration, and the persistence they have taught to me, I wish other people can teach me. Good things take time. I'm very thankful to all my teachers for being for giving us such precious time and making us that much special. All have given their best and 100% to us. But in all types of business, there are some starting circumstances. But that's alright. That's okay. Remember, your brain is your last word. However, people stop you from your success. But if you have a will, you can do it. You have dream of it, absolutely you can do it. And that's keep in mind that the word impossible also have a word impossible in it. Firstly, I didn't even know what software I will use and what type of software I will buy. With their help and with their resistance and support, I was able to do it. And they are the reason of my development and my success. Day by day, all the students were able to do anything they wanted to in their PC. Secondly, our staff were very cooperative with us. They solved our each problem regarding to any point of view. And there were also some mirror events, but they handled it smoothly. As you all know, blood is thicker than water, which implies bond will make with family and bond will make with those friends. And I have shared my blood with my teachers and with my friends. So, without blood, we cannot live, and without water, we'll die. But in the end, I would like to say, united we stand and united we fall. Thank you so much for listening. सर की मैं मिस्टेक करेक्ट करना चाहूँगी। मैं नादिया नहीं, मैं नायदा हूँ। और